So today a new topic which I am going to start, which is called as the enum. So you would have seen about the enum. In starting itself, generally two things which we have discussed, and in the topic called as data types. Data टाइप में इसमें हम लोग दो टाइप के दो चीजें डिस्कस किए थे. एक जो था आपका वो क्या था, दैट वाज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट इट इज. एंड सेकंड वन वाज द primitive data type, right? Or you can say first one was the primitive data type. ये था. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में जनरली जो है आपका एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ये आता था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में. वो कौन कौन सा? द वन विच आई वाज राइटिंग इज द क्लास एंड द सेकंड वन वाज इंटरफेस. These two were the major data types in Java in the case of user defined data type, right? But from JDK 1.5, one more data type got introduced, that is the enum. And so that was the first one, and second one was the annotation, right? So one was the annotation and one was the enum. So one enum and second one is the annotation. You will see that in JEE 6 you can call, I think you would have heard J2EE, right? So in JEE 6, which is a advanced version of advanced Java, you can say, in that advanced Java is totally changed by using this called as the annotation. When we started using this annotation, so everything gets completely changed, because the टास्क ऑफ XML, जो XML में हम लोग मैपिंग वगैरह काम करते थे, दैट इज कंप्लीटली गॉन. एंड जस्ट वी कैन राइट बाय जस्ट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ एनोटेशंस, वी कैन डू द वेरी मेनी थिंग्स ऑफ द एनोटेशंस बाय यूजिंग द एनोटेशंस. सो आई एम नॉट जस्ट डिस्कसिंग द एनोटेशन, आई एम डिस्कसिंग विच वन नाउ? enum. So let's say that the enum which I am going to discuss in this. When I talk about the enum, so enum is what? Enum is what it is? It is an user defined, what is that? Data type. It is a user defined data type. Fine. So if it is a user defined data type, so in this data type, what was the need first? What was the need to define the user defined data type? Because already there was a class, there was an interface. Then what was the need to get the user defined data type? That is one important question. Because see, what are different kinds of facilities which we are getting in the case of class? Other than that, we just wanted to achieve some more things. That's the reason we got the enum. In case of class, you would have observed one thing, which is a static, and which one next now? Final variable, we got it here, right? That was the static final variable, right? It was something called as the constant. So the mainly this substitute which we started getting in the case of enum. So I'll just write here the syntax to write the enum. What is the syntax to write the enum is, when I am writing, suppose enum I am writing, it is a keyword. This is the keyword which you are writing in order to define the enum. And with this keyword, suppose I am writing the name of the enum is the month you are writing is the name of the enum, and we need to just terminate it. This is the basic syntax, right? Now in this syntax, the very first thing which I am writing about the enum is that if we are going to define something, what we are going to define, that the enum month which I have written in this. So in this, the first line which you are writing must be the enum constant. First line whatever you are writing must be the enum constant. What is this enum constant? That we will see what is this enum constant is. What is the role of this enum constant? That also we are going to understand, right? Okay.
First, whenever we are writing any enum constant, so first is, see here, if just I am writing, for example, I'll write one enum constant I am writing. So let's say enum color I am writing. What I am writing now? Enum color I am writing. So in this enum color, what I am going to write is, suppose red I am writing. What is that? Red I am writing. So this red is an enum constant. What is that? Enum constant. If I am writing here the blue I am writing, right? So this is what now? The blue which is there is an enum constant. The red which is there is an enum constant. And if instead of this, suppose I am writing something green I am writing, so this is also an enum constant. Now what do you mean by the enum constant? If I will ask that what is the data type of this enum constant, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये बेकार का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, बिकॉज सी हियर enum, वी आर प्रोनाउंसिंग इट इटसेल्फ एज एन enum constant, हम इसको बोल ही रहे हैं कि enum constant है, तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ? enum हो गया. वो enum कौन सा है? कलर टाइप का enum हो गया. ठीक है, क्या हो गया? ये कलर टाइप का enum हो गया. सो ग्रीन इज द enum constant ऑफ विच टाइप? कलर टाइप. कलर इज व्हाट? इज एन enum. क्लियर है? अब तो ये तो आप लिख सकते हो. अब इस enum constant की हम कुछ बेसिक सी बातें समझते हैं. बेसिक बातें क्या समझते हैं इस enum constant की? कि अगर ये रेड है तो रेड है जो है इसका इट इज इन स्टैटिक. ये क्या है? स्टैटिक एंड फाइनल है. ये बाय डिफॉल्ट है. ये बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट इट इज इन स्टैटिक एंड फाइनल. समझ रहे हो? अब स्टैटिक फाइनल के साथ आप ये पूछो कि ये इंट है, स्ट्रिंग, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रिंग, राइट? रेड, RED, तो आपको ये कहीं डाउट ना हो जाए ये रेड स्ट्रिंग तो नहीं, स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है? enum constant है, राइट? Why I am writing red? और आप पूछ सकते हो कि क्यों सर, क्या 1 2 3 नहीं लिख सकते क्या इस enum रेड की जगह पे, या क्यों कुछ और? आपको एक बेसिक रूल याद रखना होगा कि अगर हम कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं, सो दैट आइडेंटिफायर मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ न्यूमेरिक. मालूम है? सो हाँ, रेड 1 लिख सकते हो, ब्लू 1 लिख सकते हो, और कुछ भी लिख सकते हो, बट इट शुड नॉट स्टार्ट विद द न्यूमेरिक. सो दैट identifier concept we must have to follow here in the case of enum also. That is the basic thing which we must have to follow whenever we are defining this enum. So that is the red, blue, green and all things as I have written, right? So this is a static final. Okay. Second important thing about this enum is this all enum whatever we are defining is by default is having some ordinal value. What is that? Ordinal value. Ordinal values which is there in one form, it represents its position. What it represents? Its position. And third, I'll just discuss all these things programmatically. I'll show by writing the by program. I'll write it and I'll show to you what is this ordinal value and all. ठीक है? अब जो दूसरा हम बात करते हैं, ये enum का क्या हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या? कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ enum? जैसे क्लास था तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन? कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ enum? व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन? Because the same question we have asked in the case of class, we have asked in the case of interface, we have asked in the case of further things, right? The same question we have just asked in the many different forms, right? So can we create the object of a class? Yes. Question is yes, we can create the object of a class. Whereas can we create the object of an interface? No, we cannot instantiate any interface. Can we create the object of an enum? Can we create the object of an enum? No, we cannot create the object of a enum. Now the second thing is about this enum is, suppose when I am talking about like what to do. So in enum, like as in the last one which I will see, enum, as I'll write same thing, color which I have written previously. In that what I am writing? Red, blue, green and all things suppose I have written. Fine. So in that, okay. When I am saying that, so how to instantiate it?
how to instantiate it. See, we don't need to instantiate it. हमें कोई जरूरत नहीं है इसको इंस्टेंशिएट करने की, और यू कैन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की. वाई? बिकॉज द इनम कॉन्स्टेंट्स विच यू आर डिक्लेयरिंग हियर, ये जो आप इनम कॉन्स्टेंट्स यहां पे डिक्लेयर कर रहे हो, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ऑल थिंग्स, और एनीथिंग वॉट एवर यू आर डिफाइनिंग, itself is an instance of that enum. So I'll write one point, very important point, that enum which you are writing, enum constants are object in itself. समझ रहे हो आप? ये ऑब्जेक्ट है अपने आप का, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप में एक इंस्टेंस है. तो इस इनम कलर के इंस्टेंस कितने हो गए? 1 2 3 हो गए इंस्टेंस. जितने इनम उतने इंस्टेंस क्रिएट हो गए. समझ रहे हो? सो क्वेश्चन इज, सो वन मोर पॉइंट, दैट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, आप अगर न्यू कीवर्ड लिखो तो इसको यूज करके हम इनम का कोई भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट क्रिएट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ विच वन नाउ? न्यू कीवर्ड बाय फॉर द इनम. क्लियर है आपको? अब जो दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं कि अब दूसरी चीजें, जैसे कि हम कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं. वी विल जस्ट सी सम प्रॉपर्टीज. व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी आर टॉकिंग अबाउट? वी विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन, राइट? वन साइड वी विल राइट अ क्लास एंड सेकेंड साइड वी विल राइट द इनम. समझे आप? मैं कोई डिफरेंस नहीं बता रहा आपको. मैं क्या चाहता हूं कि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसको कंपेयर कर सकें. क्लास है, क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्या? ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, या और भी तरीके हैं जिसको यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट. इनम में हम ये काम नहीं कर सकते. वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इनम बाय यूजिंग दिस. क्लियर है? दूसरा बात, अगर हम जैसे बात करें इसमें, सेकेंड थिंग विच व्हाट इट इज देयर, अ क्लास विच इज देयर. ध्यान से समझना आप. In class it is not mandatory to write the enum constants या any constants, या कोई mandatory नहीं है क्लास को लिखने का कि किस फॉर्म में आपको लिखना है क्लास, right? No procedures, no fixed rules that we need to write this, we need to write that, right? But whereas in enum, the first line, what is that? First line must be enum constant. बात समझ में आ रही है आपको? When again I am talking about the third point, so enum, it must, first line which is there must be the enum constant. At the third point which we will say, what is the third point which I am about to discuss is that the third point which I am discussing is a class which is there. A class can extend another class, class can implement another class, right? It is class can extend a class can implement a interface. Whereas, so हम लोग इसमें inheritance यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं? inheritance को यूज किया जा सकता है by extends keyword. ठीक है ना? और which one now? implements keyword. दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते. एक्चुअली हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही है, राइट? अब जो दूसरा रहा इसमें कि enum cannot extend enum. enum जो है वो enum को extend नहीं कर सकता. enum cannot extend enum. ध्यान से समझना. enum cannot extend enum. enum cannot extend a class. enum किसी क्लास को भी extend नहीं कर सकता. but enum can implement a interface. समझे आप? enum can implement a interface. So, ये है जो आपका enum है. अगर कोई enum can implement something, what is that now? Some interface. So again the same rule it has to follow, that it has to, what is that? Override the methods of which one now? Interface. It has to override all these methods. That is the thing which we can do that and we have to do that, right? ये हुआ तीसरा जो point, important point, sorry, fourth point which is there. अब fourth point पे क्या है आपको? अब ध्यान से देखना. That we can write a
class inside another class, inner classes. We can write class inside a method, or we can write class inside any local context also, which we will call it as a method local inner class or something like that. Whereas when we talk about enum, so enum can be written inside enum. I'm not writing all the points here, right? That is about the inner classes, or we can say method local inner class. Can I write it? Okay. When I am writing method local inner class, so at the same time when I am talking about enum, so enum can be there inside the enum. enum जो है enum में लिख सकते हैं. दूसरा enum जो है वो किस में लिख सकते हैं? क्लास में लिख सकते हैं. But enum cannot be inside some local context which means that some method or block or anywhere inside the any local context we cannot write it. We cannot do this. Did you understand something? कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते. enum को किसी local context में ऐसा कुछ नहीं डिफाइन कर सकते. ठीक है. अब हम अगर अब कुछ हम बात करते हैं, इस पे कुछ डिस्कशंस करते हैं दैट. और इसमें एक और पॉइंट आप अगर देखो कह लो तो द पॉइंट फिफ्थ वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जो फिफ्थ पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका मालूम है? फिफ्थ पॉइंट ये है कि जैसे कि इनम के अंदर जैसे क्लास है, सो इफ आई एम राइटिंग अ क्लास, राइट, सो इन क्लास different members we are writing in class different member we are writing, right? So like the way in enum what all different members we can write, that we will see. Clear है? तो अब मैं उसको next आपको दिखाने जा रहा हूं कि in the enum what all different members we are writing here. Clear है? तो जैसे कि अगर हम एक enum define किए, for example enum मैंने लिखा और उस enum का नाम मान लो हमने क्या दिया? डेज लिया. क्या दिया? डेज दिया. और इस enum में आप समझना थोड़ा सा क्या मैं लिख रहा हूं. इस enum में पहला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, देखो पहला लाइन क्या होना चाहिए? enum कांस्टेंट होना चाहिए. ध्यान देना, अब ध्यान से देखो आप. अगर आपने पहला लाइन enum कांस्टेंट लिखा और इस enum कांस्टेंट के बाद और भी कुछ मेंबर आप लिखना चाहते हो क्लास के अंदर, सो दिस लाइन मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन. मस्ट बी देयर. क्या होगा? मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन. बात समझ में आई? मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन when you are going to write some other member other than this enum constant. Here now you can write the block. तो मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूं, I'll just show you by. मैं क्या लिख रहा हूं आपको ध्यान देना. दूसरा पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं इसमें लिख सकते हैं हम लोग blocks, we can write it. थर्ड वन we can write variables में आइदर आप क्या लिख सकते हो? इंस्टेंस वेरिएबल. समझ में आ रहा है? और स्टैटिक वेरिएबल वी कैन राइट. सो आइदर इंस्टेंस वेरिएबल और द स्टैटिक वेरिएबल आई कैन राइट. फोर्थ वन जो है क्या है आपके पास? तो एक हो गया enum कांस्टेंट, दूसरा ब्लॉक्स, तीसरा वेरिएबल्स में इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल. अब हम लोग इसमें मेथड्स भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? मेथड्स भी लिख सकते हैं. वो भी किस टाइप के? आइदर इंस्टेंस भी लिख सकते हो या फिर आप इसको स्टैटिक भी लिख सकते हो. दोनों लिख सकते हो. बात समझ में आई आपको? आफ्टर दैट व्हाट यू कैन राइट? फिफ्थ वन विच इज देयर, यू कैन राइट क्लास ऑल्सो. यू कैन राइट क्लास इनसाइड वेयर? enum. सिक्स्थ वन व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट enum इनसाइड enum. समझ में आ रहा है आपको? और enum इनसाइड enum. और सेकेंड पॉइंट इज द enum in class. enum in class also you can write it here. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा सिनेरियो कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, कहां पे enum के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं. ठीक है.
अब यहीं पे मैं एक काम करता हूं, आई विल जस्ट राइट वन स्मॉल प्रोग्राम फॉर व्हाट, for the enum, just to check the enum. I am writing one a different program just to check it out the enum. So I'll just select your workspace, which is the B39 batch which I am writing, and for this I'm selecting this workspace. It is just going to open. Okay, here in this now I'll close it. And I'm just declaring what I'm creating one project. The project which I'm creating is the enum I'm creating. And one more important point I'll just show you. You would have seen for all the classes java.lang, for all the classes which you are writing java.lang dot, which one now? Object class which is there is the super class. I'm just showing you something here. You just Java P java.lang.object class we are getting, means it is the super class for all types of classes in Java. For classes it is the super class, right? At the same time when I am writing java.lang.enum I am writing. So see here, for all the types of enum, for what? All the types of enum, java.lang.enum which I am writing class, that is the super class for all types of enum whatever you have written. जितने भी enum आपने लिखे हैं उसके लिए क्या है, ये super class है. कौन सा super class है? java.lang.enum which is there is in super class for all types of enum classes which you are writing in these cases. Is it okay? Now you can see the signature of this enum, many things it is there. Here we have used something of the generics also. Okay, so let it be. So here see that comparable, you know very well about the comparable, what is the comparable and comparator interface, and again is the serializable, it is of the IO package. We'll discuss in the further classes what is the serial. So okay, I'll do one thing now. I'll do one thing is I'm writing one enum. So in this enum I'm just going to define what I'm going to define. I'm going to define a class. I'm going to define a what? It's an class. I'm going to define here is in class. So com.jtc dot which one now? P1, and inside this JTC which I am going to define. I'll just do one thing. Now in this class which I have defined here, I'm writing a class. So see, first I'll start with the first point itself, enum when I am writing. So enum I am writing as like suppose months which I am writing as an enum. क्या लिखा मैंने? एक enum लिखा, उसका नाम क्या दिया मैंने? Month दिया, name of the enum. So when I am giving the name of the month as an enum, and see here the very first point which I will verify here is I am writing inside this one method void of m1 method I am writing, and inside this m1 in which class now I am writing? Months which I am writing, right? You will find here it is giving some error. What error it is giving? Syntax error, token invalid modifier. We cannot use it. At the same time when I am using suppose Jan, right, it is FEB fab MAR, I have used it here. Now every error is gone. कोई error नहीं है. क्यों? क्योंकि जो first line लिखा है आपने, this is the which one now? Enum constant, right? What I was discussing here is that whenever I was about to discuss the enum constant, in the very first thing which is there, the important thing is I was talking about this semicolon. Are you getting my point? That semicolon. If you are about to write all these members, then you must have to specify this semicolon, or else it will not work out. It will give the compile time error. So I'll do one thing, I'll remove it all these things. Okay, second important thing is, see here, so I'll do one thing, that I'm removing it, semicolon. Have I removed it? I have removed it. When I have removed it, see everything is giving the error. What it is giving? Error it is giving here, right? When it is giving the error, so I'll do one thing, I have just given here the semicolon. One at the same place, static void of which method I am writing? M2
method I am writing, and in that, see all the possible options which I can't do here, but yes, it is there in your workbook documents, it is there, you can practice from there. Many number of examples I have given. Most of the concepts I have discussed here. So now similarly, if in the enum I am doing one thing, what I am doing, you just understand what I have written here now. IB in months which I am writing, and at the same point I am writing here, that is SB in which one now? Months which I am writing. So one is the instance block which I have written, and the second one is the static block I have written. Both of that I have written here. So if I have written, one is the instance block, second one is the static block, and all that part of things which I am writing here. So this is the static block, and this is okay. Now my main important thing which I need to understand here is that suppose when I am writing a class, what I have written? A class. Very simple thing. I wanted to access. What I want to access now? I wanted to access here, the things which I wanted to access is that inside this class itself, Jan, Feb and March, some variables are there. So one important thing is that I cannot create the object of that class. Enum object cannot be created. So if I cannot create the enum of en is equal to new of which one now? Enum I am creating this object, we cannot create it. Enum cannot be instantiated. Even in the case of enum, we can write the constructors also. We can write what? Constructors, we can write it here. So now next what I am doing is, ध्यान देना आप, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मंथ है, so I am writing month dot. अब देखो मंथ एक क्या है, enum data type है, तो इस मंथ का m मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, and after writing the month which I am taking here, months dot which one now, values I am taking here. What is that? Values which I am taking here, right? When I am taking here the values, so this values which is there, it's returning to the type of array. Now when I am writing a for loop, so month of m1 colon, it is an enhanced for loop which I am using, hope you can understand all of you, and then I am printing m1. Associated with that, I am just taking some space, and then I am writing here m1 dot which one now, ordinal values which I am writing. You just see here what I have done in this. Is it printing something 0, 1 and 2? This is the ordinal value, right? And it itself, अब ध्यान देना आप यहाँ पे, ध्यान ये देना है कि हमें मान लो किसी m1 मेथड को कॉल करना है, m1 मेथड इज व्हाट? इंस्टेंस मेथड है, तो हमें मंथ डॉट जैन कॉल किया, मंथ डॉट जैन को कॉल करने के बाद m1 मेथड को कॉल करिए. मैंने क्या बोला, जैन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये जो जैन है वो अपने आप में स्टैटिक फाइनल है, तो हम क्लास के नाम मतलब इनम के नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं. मंथ जो है एक इनम है और ये जैन है स्टैटिक फाइनल है, सो हम लोग मंथ डॉट जैन को एक्सेस कर सकते हैं, है ना. जब मंथ डॉट जैन को एक्सेस करते तो m1 इन मंथ एक्सेस हो गया क्या. और यहीं पे एक और मैं काम करता हूं, देखो अगर स्टैटिक मेथड है m2, तो स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी डोंट नीड द ऑब्जेक्ट, वी डोंट नीड इंस्टेंस, सो डायरेक्टली आई कैन कॉल मंथ डॉट m2 मेथड विच आई एम कॉलिंग. और जब हमने m2 मेथड को कॉल कर दिया इनसाइड दिस, सो व्हाट इज गोइंग टू कम नाउ, m2. So in further classes, in further tutorials, I'll show you many other types of operations related to the enum. You can see the output here, right? It is. So in that, if you have any questions, you can ask. Thank you.